शुभ अपराह्न बंधुगण। आज मु कहबी आटीट्यूड केमती बदली पार मुझे आगु आटीट्यूड माने कौन केते प्रकार केमी आटीट्यूड तैयारी हुए। आज मु कहबी केमती आटीट्यूड बदली पारिबा। आम जाचु जहाँ तैयारी हुए ताकू भी बदली भी हुए। तेना आम जो आटीट्यूड आम तैयारी होम बदल पारिबा। आम गोटे उदाहरण देवी आमर बेले बेले भोटिंग बेले गोटे आंटी इनकम्बेन्सी कार्य करे माने गोटे सरकार 5 वर्ष होला परे लोक चाहती बदल देवाई भल कम कर बदल दिखते। तेणु यहाँ हूँ गोटे माने आटीट्यूड तार थिला गोटे भल से पुणी बदलिक आउ दिगला भोट। तेणु आटीट्यूड चेंज कर हुए आमर आटीट्यूड चेंज हुए केमती भी आटीट्यूड चेंज हुए प्रोसेस बाय व्हिच द बैलेंस इज ट्रांसफॉर्म और चेंज द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बैलेंस माने तार फोर्स तार स्ट्रेंथ ताको ऑपोजिट वे आम तले डेभलप करबा बदल जाओ। तेणु यहाँ हूँ माने ट्रांसफॉर्मिंग और चेंजिंग द बैलेंस ऑफ द एटीट्यूड कॉजेस एटीट्यूड चेंज। आमर जो चेंज करूँ से दी प्रकार आम देखू दी प्रकार उपाय चेंज हुए। गोटे आम इंटरनल लेवल चेंज हुए तो मैं कहूँ कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी अप्रोच ताकि इंटरनल लेवल चेंज हुए। आउ गोटे हुए कौन ना एक्सटर्नल लेवल चेंज हुए सेटा हूँ आम कहीपर परसुएसन ये सब कहले तो से चेंज करे केमती। तेणु गुड़े हूँ आम इंटरनल कंसिस्टेंसी सब चाहूजे माने टू बी इंटरनली कंसिस्टेंट सेटा गोटे बहुत बदली जाए एटीट्यूड। आउ केते गोटे फैक्टर काम करे आम एनवायरनमेंट रे बा केते गोटे जिनिस आम अप्लाई करू टेक्निक जहाँफल कि एटीट्यूड बदली जाए। आमर गोटे आमर कहते हिडर 1946 गोटे बैलेंस थ्योरी से कहते आम जो एटीट्यूड करूँ देखो एटीट्यूड जी एटीट्यूड देखाए जहाँ ऑब्जेक्ट टार्गेट ऊपर देखाए जहाँ कर विषय देखाए गोटे ये हूँ कौन ना पर्सन अदर पर्सन तर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट ये तीन टाक नहीं कर आम जो एटीट्यूड जनक प्रति आम देखू जोड़ा ये फैक्टर कम करुच्ची मैंने यहाँ गोटे कहूँ सेंटिमेंट रिलेशनशिप आम आम कहूँ गोटे जमी जोड़े सेंटिमेंट आ गोटे यूनिट आम जो रिलेशनशिप तैयारी हुए जोड़ा जिन कम करे गोटे सेंटिमेंट आ गोटे यूनिट। सेंटिमेंट हूँ गोटे बॉन्डिंग गोटे बॉन्डेज दि जाए आउ यूनिट हूँ कौन गोटे पॉजिटिवनेस। तेणु आम गोटे फॉर एग्जांपल आम कहूँ जे रोहन लाइक्स कॉफी जड़े कॉफी की भल पाऊँ आई लाइक टी माने यहाँ गोटे देखुच बॉन्डिंग मतलब टी भल लगे किंतु मत लगुच बेले माने फॉर एग्जांपल आई वर्क विथ हिम आई लाइक टू वर्क विथ हिम आई वर्क विथ हिम ये जो वर्किंग गोटे पॉजिटिवनेस संगे काम करी। तेणु आम गोटे बॉन्डिंग जोटा आम कहूँ आमर सेंटिमेंट आ गोटे कहूँ आमर यूनिट जो आम कहूँ पॉजिटिवनेस इंडिकेटिंग पॉजिशन ये दीटाक आमर जो रिलेशनशिप इंडिकेट कर रिलेशनशिप दीटा थाए आमर जो रिलेशनशिप बेले बेले कौन हुए आमर को इट इज बैलेंस्ड। गोटे उदाहरण दूसरी मुझे आम गोटे लोक भल पाऊनु एनिमी गोटे आम अच्छे आम समबडी इज एन एनिमी टू मी आम कहूँ एनिमीस एनिमी इज माय फ्रेंड। अच्छा एनिमी गोटे कि मोर अच्छी ये गोटे इम्बालांस रिलेशनशिप किंतु एनिमी एनिमी आम आम कौन कहूँ गोटे बालांस रिलेशनशिप गोटे कंसिस्टेंट एनिमी एनिमी माने सी मोर निश्चय फ्रेंड प्रति एटीट्यूड भल। आउ बेले बेले एमती हुए जे आम गोटे लोक भल पाऊनु लोकटा भल पाऊनु तार लेखा भल पाऊँ तार कथबार्ता भल पाऊँ तार मनकर आम कहूँ ही इज नॉट ए गुड बॉय बट रीड्स वेल ही इज नॉट ए गुड बॉय बट ही हैज रिटन ए गुड पोएम ये कौन आम भल पाऊँ भल पाऊनु तेणु ये कौन आमर गोटे यहाँ हूँ अनबालांस्ड रिलेशनशिप यहाँ अनबालांस्ड
आम कौन कर डिसलाइक रही लाइक भी रही तेणु आम आमर जदिव तक लाइक करुचु आम बेले बेले तार पोएम कि तार ये आम बाध्य डिसलाइक करुचु कारण धीरे 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 आम देखु भल लगुनि माने एगुड़ा कहले भी भल लगे आउ तेणु इम्बालांस रिलेशनशिप जो अच्छी अनबालांस रिलेशनशिप गोटे अनबालांस्ड ये धीरे 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 बालांस हम तेणु आमर ये बालांसिंग प्रोसेस रे बेले आम लाइक डिसलाइक डेभलप कर आउ गोटे थ्योरी हूँ कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी एटा हूँ कौन ना आमर बेले आमर गोटे विश्वास रही बिलीफ रही कि आमर गोटे रोचे आटीट्यूड रोचे जोटा कि आमर इनकनसिस्टेंट बा इनकम्पाटिबल आम फॉर एग्जांपल आम कहूँ स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ स्मोकिंग खाइले रोग हम कहूँ किंतु हम स्मोकिंग करुचु तेणु यहाँ कौन गोटे इनकनसिस्टेंसी तेणु आम देखुचु जे स्मोकिंग करवाटा भल नुहे आम कि करुचु यहाँ गोटे इनकम्पाटिबल आटीट्यूड यहाँ भल नुहे जानचु आम थी करूँ कहीं इनकम्पाटिबल तेणु आमर ये कौन हो आमर गोटे डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो धीरे 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 स्मोकिंग आम कौन करूँ धीरे धीरे वी हैव टू चेंज द बिलीफ आइदर स्मोकिंग बंद करूँ बा स्मोकिंग खराब बोली कहूनु आम तेणु ये जिनटा जो हूँ यहाँ कॉग्निटिव डिसोनेंस सब आम चाहूँ जे आम भितर आम माइंड रे डिसोनेंस न रहू किसी इनकन्सिस्टेंसी न रहू किसी इनकम्पाटिबिलिटी न रहू इट मस्ट बी वेरी स्मूथ तेणु आमर जो डिसोनेंस होची कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस आम यहाँ देखुचु भल नुहे कि यहाँ भल तभी भी यूज करुचु डिसोनेंट तेणु से जो कॉग्निटिव डिसोनेंस होची आम तीन प्रकार उपाय सॉल्व करुचु गोटे हूँ कौन ना चेंज द बिलीफ यू चेंज द बिलीफ चेंजिंग बिलीफ इज डिफिकल्ट बट यू ट्राई टू चेंज इट ताफले कौन हम ना तुम्हें जानव जे यहाँ भल नुहे तेणु तुम्हें आसा कर तो चेंजिंग बिलीफ स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ ये तो बिलीफ गोटे चेंज इट नॉट बैड फॉर हेल्थ you think in that way so changing belief one way you change the belief and second is changing behavior so here you believe that smoking is bad for health change the behavior don't take smoking I would also now change the perception of behavior change the perception for example smoking is bad so you can change this belief that smoking is bad you can change it or you can change the behavior or you can change the perception आम कहूँ स्मोकिंग बैड आम सब स्मोकिंग करूँ बेले बेले करुचु तेणु स्ट्रेस हो स्मोकिंग करुचु तेणु अल्प समय करुचु दैट इज एक्सक्यूजेबल दैट डू नॉट अफेक्ट द हेल्थ एवं से भाया आम भी कहूँ आम जो स्मोकिंग करुचु खाली स्ट्रेस नहीं बेले विथ फ्रेंड्स सब फ्रेंड्स आसती सो परसेप्शन चेंज टू बी चेंज व्हाई नॉट रिपीटिंग राइट सो हियर जो आमर जो एटीट्यूड वी कैन चेंज by making it consonant dissonance अच्छी we can make it consonant by removing incompatibility in three ways that is changing belief changing behavior and changing the perception of behavior आमर बेले बेले कौन हुए आमर बेले बेले फोर्स कंप्लेंट्स बिहेवियर हुए आमको बेले जो भल लगे आम जबरदस्ती भी करूँ कारण बिकज ऑफ दी फोर्स ऑफ नॉर्म कि गोटे फोर्स ऑफ ग्रुप इफेक्ट कि ओब्लिगेशन कि एटिकेट जन को देखले आमको भल लगे कि देखले जो एटिकेट हो गामसा पकाऊ लमटे मुंड लगुचु दो डू नॉट लाइक कारण एटिकेट दरकार आम तेणु एटिकेट ड्यू टू ओब्लिगेशन you do not like a teacher but when you see out of obligation you bend your head then due to obligation then due to etiquette or due to the way to follow the norm sometimes we have to change the belief system or you have to change the attitude so attitude can be in that way changed as a kind of force change you don't like it but forcefully because of the situation demand you actually internally you feel
that is I should do this. This is actually force compliance. We are under force to comply with that behavior. And thirdly, you can say also decision making and cognitive dissonance. आम सब डिसीजन गोटे नेला बेले जो डिसोनेंस क्रिएट हुए. एग्जांपल गोटे झीलटीए सी भावुची मु बाहा उचित बापा कहते बाहापी बापा कथा बाहा उचित ना मु पाठ पढ़ी मो कैरियर बिल्ड करी तार माने डिसीजन मेकिंग प्रोब्लेम से कोटा डिसीजन कर कौन हो माने डिसीजन इन कैरियर चॉइस आउट ऑफ द डिसीजन टू मैरी एंड कंप्लाई विथ पेरेंट्स विशेस. सो एगुड़ा कदी तुम सी अल्टीमेटली गोटाए कर छाड़ कि सब छाड़ला कह मुझे कहीं छाड़ी मुझे कहीं बाहरी मुझे बड़ भूल कली ताने तार सब क्रिएट चलला तार डिसोनेंस क्रिएट है. तेणु सी कौन कर जो डिसोनेंस क्रिएट होची से गोटे छाड़ला गोटे जिन को गोटे को अप्ट करनेला जहाँ छाड़ा ताकू सब मन पकेला मुझे कहीं बाहरी मुझे पढ़ता मो सांग मैंने पढ़ले मुझे पढ़ता कॉलेज पढ़ता. तेणु ये जो थॉटा इट इज क्रिएटिंग डिसोनेंस इन माइंड. तो दिस हैज टू बी सॉल्व्ड. ताको रिजॉल्व न कले तुम सब रहा ये जो माने कॉग्निटिव डिसोनेंस सइला कौन कर से ना तुम्हें हाउ टू बैलेंस इट. यू डू दिस सो यू increase attachment to the act you have done and also decrease attachment to the one you have not done. For example, तुम्हें बाहा आ पढ़ी पारनी तुम्हें increase attachment to marriage कर भल हो चाइल्ड जन्म हो पिलाटी हम तेणु तुम तुम ये मदद हो पार कि तुम तेणु यहीटा जो जिन तुम्हें ग्रेजुअली you become very favorable to this जहाँफल कि तुम जो डिसोनेंस कमी कमी जीव. तेणु मोर यू आर अटैच्ड टू द डिसीजन यू हैव टेकन लेस विल बी डिसोनेंस. एवं जो जोटा को तुम कर पारिन फॉर एग्जांपल तुम कैरियर बिल्डिंग डोंट थिंक ऑफ द कैरियर यू कैन थिंक जे पर मु कैरियर कर पारिबी. तेणु छाड़ी कैरियर बोली बेसी भावनी आउ देखो तुम डिसोनेंस सॉल्व हो. आ गोटे कौन हुए आमर ना गोटे एफर्ट जस्टिफिकेशन. बहुत समय आम बहुत उद्यम करूँ कि फलटा सेमती आकर्षण नुहे. गोटे गोलटा ट्रिवियल छोटिया गोलटे आम कि बहुत परिश्रम करूँ. मन तुम गोटे जिन आने जाऊच तुम गोटे गोटे पेपरटे किणा जाऊच स्टेशन रू न्यूज पेपरटे गोटे आइटमटे दुकान किणा जाऊच से बाट सब बंद हो बुली 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 बहुत समय पहुँचल तो बिग एफर्ट एत उद्यम कल छोटिया जिनटे ना यू आर थिंकिंग दिस विल क्रिएट डिसोनेंस से कौन पे आसली एटा एति बाट एति परिश्रम ये गोटे मन में आला डिसोनेंस. एटी कौन हुए तुम्हें यदि एमती भाव तुम डिसोनेंस सैला माने तुम्हें हाउ टू सॉल्व इट तुम्हें कौन कह ना यू रैशनलाइज दैट एफर्ट इज नॉट दैट भाव मन मन ये एफर्ट मोर एत बिग नुहे आज एमती ना मोर नॉट बिग एफर्ट. एवं ये गोटे आस्पेक्ट आउ गोटे आस्पेक्ट जी गोल तुम अच्छी जो पाइच गोलटी ताकू तुम बड़ बोली भाव एनीथिंग एनी गोल यू आर अचीविंग द एफर्ट यू आर मेकिंग फॉर द गोल यू शुड थिंक दैट दिस एफर्ट इज नॉट दैट बिग एंड द गोल इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर मी. तेणु यही लाइट में भाव तुम जदि तुम भी जो डिसोनेंस क्रिएट होती सी दैट विल बी रिमूव्ड रिजॉल्व. तेणु आमर यही उपाय जो डिसोनेंस क्रिएट हुए डिसोनेंस को आम जो रिजल्व करवा कले आम आटिट्यूड बदले. तेणु आम आटिट्यूड बाय रिमूविंग डिसोनेंस बाय रिमूविंग इनकम्पैटिबिलिटी वी आल्सो चेंज आवर आटिट्यूड. तेणु आमर इंटरनल लेवल रे जो आमर जो डिसोनेंस आम इनकम्पैटिबिलिटी आम जो रिमूव करूँ जो कहली मु कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी कहली मु. तेणु आम वी ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस डिसोनेंस टू बी मोर कंपैटिबल सो दैट वी कैन चेंज द एटीट्यूड. आम आउ गोटे एटीट्यूड चेंज हुए मुझे कही आगुरी बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड परसुएशन.
आमर बहुत समय देखु जब आडभर्टाइजमेंट देखु बहुत समय लोक तुमको कहती घर घर आसी बोली कहती सेटा यूज करो एटा यूज करो एटा भल जिनस इवन विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी भी सब दे आर स्पीकिंग इवन दे आर गोल्स देयर अचीवमेंट्स तेणु आम शुणिक बेले बेले आम आम आटीट्यूड को बदल दो यहाँ परसुएसन यहाँ हूँ गोटे टेक्निक लाइक आडभर्टाइजमेंट भाई टेक्निक फॉर चेंजिंग एटीट्यूड आम जो परसुएसन हुए ये गोटे डुअल प्रोसेस इनवॉल्व करे गोटे है एलाबोरेटेड बा एलाबोरेशन लाइवलीहुड प्रोसेस आ गोटे है ह्यूरिस्टिक बा सिस्टमैटिक मॉडल गोटे एलाबोरेशन लाइवलीहुड प्रोसेस माने माने तुम्हारा जो टारगेट पर्सन जहाँ गोटे बदल सी पूरा विलिंग मोटिवेटेड तुम ताको माने विथ ऑल योर क्वालिटी परसुएसन तो कथा कहीकि विभिन्न प्रकार कंटेस्ट कहीकि तुम आइटमटा को बढ़िया यहाँ एमती तार यूटिलिटी एमती कहीकि राजी कर ना सी विलिंग अच्छी किंतु बहुत आउ केते बेले बेले लोक न था विलिंग न था मोटिवेशन लेवल लो तो सीटी कौन हुए ना हुए तो दिस परसुएशन परसुएसिव आर्गुमेंट दिस क्वालिटी ऑफ आर्गुमेंट इज नॉट मोर अप्रिशिएटेड जो माने विलिंग द क्वालिटी ऑफ परसुएशन आर्गुमेंट इज मोर अप्रिशिएटेड जो अनविलिंग जो सब लो लेवल मोटिवेशन से विलिंग नुहति दे आर लो मोटिवेटेड से कौन हुए ना गोटे ह्यूरिस्टिक मॉडल पेरिफेरल फैक्टर्स आम ह्यूरिस्टिक मॉडल इमिडिएटली माने ऑटोमेटिकली क्विकली बा स्पॉन्टेनियसली आम चेंज कर पारू जोटा किमिति ना ड्यू टू फिजिकल अट्रैक्टिवनेस जी कहूँ से कौन कहूँ बेस इम्पोर्टाट न होकर से कौन तार केमती चेहरा केमती से कौन पिंधि केमती आप्लिक कहूँ बा सिमिलारिटी टू ऑडियंस से ऑडियंस के सिमिलारिटी कथा कहूँ व्हाट इज हिज सिमिलारिटी बा तुम जो किए कहूँ वेदर इज क्रेडिबल और नॉट गोटे वीआईपी किए कहते somebody says like Gandhi speaking, somebody like Modi speaking, somebody speaking a very prominent figure, it shows credibility. जी कहते who is this, what is the source? You say जो एटा होची peripheral factor. तो content टा होची central factor. किंतु source टा जो जे कहूची तार सो physical attractiveness, तार credibility, तार similar to the audience, एटा सो peripheral factor. ये दुटा काम करे इन परसुएसन मेक्स परसुएसन इफेक्टिव आमर गोटे फैक्टर अच्छी जोटा कि परसुएसन को अफेक्ट करती द फैक्टर्स अफेक्टिंग परसुएसन नंबर 1 सोर्स सोर्स होची कोन ना किए से परसुएसन करूची बा को माध्यम रे करूची फॉर एग्जांपल तुम्हारा the person who is attractive is able to convince. Persuasion is being attractive, is being effective when the source or the speaker or the persuading man is an attractive person. Or suppose you are reading a newspaper, which newspaper you are reading? That is the credibility counts करे. News बाहरची, समाज रे बाहरची कि आ गोटे कौन पेपर में बाहर कि तुम्हें देखो समाज में तो बिलीव समाज में बाहर तो मैंने दिस सोर्स क्रेडिबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट तेणु आमर कौ सोर्स मैं तो पेपर में क्रेडिबिलिटी कि गोटे मनुष्य जी कहूँ स्पीकर जी परसुएडर जी तार अट्रैक्टिवनेस केमती तार लाइकेबिलिटी केमती whether like him or not that counts that is source affecting perception so source is good perception may be effective. Secondly, the message. खाली source में जो message टा दिया गला through persuasion, एटा involving emotion के नुहे. यदि गोटे message तुम्हारा दबुची से गोटे विषय कहूची गोटे तुमको, से कथाटा का तुम्हारा दी माने good feelings create कला. पर अपन दी audience इतने good mood. तो तुम कहलो से तो लेता है that is more received. Suppose audience is in a very fearful state, you're increasing fear, they will avoid. So audience mood that counts. Ebong to kemti kahucho, how to whether your statement is appealing or not,
the message itself is applying or not, message itself is useful or not. Suppose you're speaking about Pepsi, speaking about peanuts. So now this will make the message effective because appealing. ତେଣୁ ତୁମର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛ କିଏ କହୁଛି କେମିତି କହୁଛ କ'ଣ କହୁଛ ସେ ଯେଉଁ ମେସେଜଟା that is now determining the effectiveness of persuasion. So source, I mean the persuader, then the message, the type of information. Third is channel. তুমি কেমতি কହୁଛ তোমার এটা ইন্টারাক্টিভ ওয়ে কହୁଛ we are discussing experiential way, either they are experiencing this, so whether you are the whether channel is given personally. तुम्हारा भोटिंग बेले जानते लोकटा भल लोक नुहे ठिया सी तुम घर को आसी तुमको पर्सनाली कहला तुम घर आसी तुम ठिया हाथ धरी कहला मत भोट दब तुम एक्चुअली भल नुहे किंतु से पर्सनाली तुमको आसी कहला now in an interactive way when you are approached, you are given the persuasion, you can change, you actually can change. I can give you vote. So now how to experience or what type of interactional level experience you are having that counts in making the persuasion effective. So the directly क्या तुम कहना सी personal level ले personal approach personally you are approached, that will be effective. So the channel means the means through which you are going to get the message, that is also counting. Lastly, audience. So here हमारा जो audience किए से, that is important. The effectiveness of persuasion vary in susceptibility to persuasion. For example, the persons with low self-esteem, they are more persuaded. Even the persons who are in a formative stage or formative age, or the persons who are adolescents or early adults, they are more susceptible to persuasion. You know, aged people, old people, they are not so quickly persuaded. So to whom we are persuading? What is the audience? What is the age? That counts. So a factor gudako that is effective for persuasion. Now, even if we develop the techniques, sometimes we face resistance to persuasion. हमारा जो persuasion को हमें we are having 4 types of resistance. We resist persuasion. We have an attitude. We don't want to change the attitude. We don't want to be persuaded. So there are 4 ways of resistance. Number 1 is reactance. So when the personal freedom is threatened, we resist. Somebody is persuading and you are now thinking that our personal freedom is going to be lost. So it is either directly related a threat to the image. Our image को threat करछी. तेणु हमारा जो reactance increase करिवो. We strongly protect attitude from persuasion because this attitude was self-helping. Now we are under threat. हमारी image ऊपरे कि हमारा independence ऊपरे. तेणु हमारा in that case we react. The reactance is a type of resistance to persuasion. बेले बेले तुम्हें जी जोर रे कहिवो जोर रे persuade करिवो strongly persuade करिवो बेसी तुम्हारा reactance you never accept it. देखा जाइछि यदि mildly कहिवो weak argument रे कहिवो तुम्हें धीरे धीरे यदि कहिवो that may be more effective. तेणु तुम्हारा केमती कहउछो the way you are speaking, that is also creates resistance. That is reactance. Second is forewarning. बेबेले हम जानछु जे के कहला पूर्व गोटा तुमको इज गोइंग टू परसुएड जानते पे ए से या कहबो तो इंटेंशन यू आर एबल टू गेस. सो व्हेन यू नो द इंटेंशन इन एडवांस तुमको इच्छा हो सुनिया पे सेम देख आमे देखु छी बेबेले टीवी रे
बेले गोटे गोटे आडभर्टाइजमेंट हुए आम इच्छा हुए देखा बेले न्यूज पेपर भी गोटे बाहर पेपर आडभर्टाइजमेंट वी इग्नोर इट तेणु आमर हूँ कौन ना आम वी फ्रिक्वेंटली ओवरलुक कर दो बिकज द फोर वार्निंग ऑपरेट्स आम जाचु एगुड़ा इरिलेवेंट आम जाचु गोटे आगुरी आम बहुत देखीचु नॉट नेसेसरी तेणु जो फोर वार्निंग जो वी डेवलप रेजिस्टेंस वी विल एक्सेप्ट परसुएशन थार्डली गोटे सिलेक्टिव एक्सपोजर आमर जोटा आमको भल लगे जड़े से कथा कह से कह आम तो ग्रहण कर क्विकली तेणु वेर वेरी सिलेक्टिव जड़े जमी कहूँ वेरी सिलेक्टिव देखु आमरी भाई आमरी कहूँ आम जमी लाइक आम जो आटीट्यूड रखीचु लाइक आवर आटीट्यूड सी भी कहूँ स्पीकिंग समथिंग consonant to our attitude but similar to our attitude then we accept it that is called selective exposure so we selectively attend the persuasion we try to protect our own attitude so actually we feel it is supportive type of this becomes supportive so it is selected way a selection and lastly we come to काउंटर आर्गुमेंट्स जोटी जड़े कर परसुएसन ये स्ट्रांगली पार्टी करी स्ट्रांगली कहते पॉइंट कह जोर कहते तुम्हारा एग्जिस्टिंग एटीट्यूड नाउ अंडर थ्रेटनिंग सो वी एक्चुअली स्ट्रांगली मेक आर्गुमेंट एंड वी ट्राई टू indirectly exist with our attitude जो strongly very strong involvement होइला से देखियो जे attitude आउरी gradually more and more stronger हो जिवो सहजरे बदलिबोनी तेणु जो जुक्ति गुड़ा कदी आम करूँ जड़े जुक्ति करुँ आम जुक्ति करूँ जोर पार्टन है जोर स्ट्रांगली कहला ए स्ट्रांग एक्सचेंज ऑफ आर्गुमेंट ता फल देखियो जे तुमर जो एटीट्यूड अच्छी सी सहजरे बदलिबोनी तेणु परसुएसन काम करनी यू बिकम ब्लंट से तुम काउंटर आर्गुमेंट व्हिच इज इंडिकेटिंग एक्टिव आर्गुमेंट यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड यू आर स्ट्रांगली मेकिंग आर्गुमेंट इन दैट केस परसुएसन विल बी रेजिस्टेड सो देयर आर द फोर वेज रिएक्टेंस फोरवार्निंग सिलेक्टिव एक्सपोजर एंड काउंटर आर्गुमेंट by this we develop resistance to persuasion. Now come to attitude and behavior. As you know, attitude and behavior, they are very much linked. One behave as per the attitude or attitude influences your behavior. And here we have some points to indicate how attitude is influencing your behavior. Number one, attitude specificity. This means we sometimes have our attitude in a specific way. For example, we may like psychology, but we may not like social psychology. Psychology as a whole we like. We say very interesting subject. But social psychology, we don't like it. So now specifically, we have an attitude of like and dislike. Similarly, तुम्हारे friends मान in general तुम्हारे friend मान पाऊ. Some friends, we are having some negative attitude to some friends, to say group. For example, Chinese people. We do not like Chinese people. We do not like Pakistan people. But sometimes when you see them alone or individually when they are interacting, we talk. We are impressed. We like also. So now our सब कौन हुए ना एटा जो attitude specificity. So in specific situation, we are also having an attitude independently. So in general, we may not like. In specific, we may like. Or in general, we may like. In specific, we may not dislike. We may dislike. So actually, हमारा जो attitude specificity रही
So it's very specific to somebody who, even if generally you don't like, specific you like, or generally you like, specific you do not like. So there is attitude and specificity. Second is attitude accessibility. So more accessible attitudes influence behavior strongly. आमर जो ह्यूरिस्टिक कथा कही आगे मुझे आवेलेबल ह्यूरिस्टिक ऑटोमेटिक देखु देखु मन धारणा हो जाए गोटे देखिले मैंने हाँ यहाँ बढ़िया है कि गोटे पंडित ब्राह्मण पंडित से गोटे मंत्र बोलदेला हाँ सी ठीक है सी भूल हेल्प तुम तो कह ठीक है कहीं ह्यूरिस्टिक एक्सेसिबिलिटी तेणु मोर एक्सेसिबल एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बिहेवियर तेणु एटीट्यूड if it is more accessible the behavior is also influenced and I would also na self awareness amara attitude consistent with that amara nijara jo attitude ame juda ko consistent taku ame sehi bhaliya ବ୍ୟବହାର କରୁ we act in consistency with our attitude that is with our self awareness we are aware that this attitude is this, he is telling like this, so we are behaving in terms of our self-awareness, consistency. We also, there is the behavior is linked with public self-awareness. The activity is consistent with majority wishes. I mean, but majority majority wishes, we act in that way. So we always act in our self-awareness. Whatever we want, we act in that way. Sometimes we act in public awareness. We act because majority want that. So therefore, we have the self-awareness factor in behavior. Then the attitude certainty. The attitude, if it is clear, then it is effective. And if it is correct, it is also more effective. So attitude, if it is clear, if it is correct, then it is less influenced by persuasion. Then persuasion cannot change it. Because you have clear attitude, you have very clear and very correct attitude, which you have verified. So naturally, in this case, persuasion cannot be effective. So attitude will be very strong and will be continuing. And also attitude is strength. So here the attitudinal strength, if attitude is strong attitude, then attitude and behavior, they are also very quickly linked. So strong attitude is difficult to change. And this strong attitude involves three factors and is a processing information about attitudinal object, personal environment. So this means attitudinal object ता ऊपर तुम धारणा एवं तोर पर्सनल इनवॉल्वमेंट तुम केमती पर्सनली इनवॉल्व होइछ छुटरे एंड तापर होची डायरेक्ट एक्सपोजर तुमरो ए तीनटा को फैक्टर काम करे जहा पर तुमरो एटीट्यूड इज मोर स्टेबल एंड डिफिकल्ट टू बी चेंज थ्रू परसुएशन हमरो when the attitude is possessed more often, then the strength of attitude increases. It is more possessed, actually more possessed, more used, then the strength of attitude increases. Even more relevant or more important attitudes, they are having self-serving purpose. When it is more relevant, it serves the purpose. It becomes stronger. It predicts behavior. So the more relevant attitudes are less resistant to persuasion. And finally, attitude formed through direct experience becomes stronger. Direct experience माने जिंदे वोटिंग कथा कहितली मु आज घरे तुमको कहि कि गले डायरेक्टली तुम कैंडिडेट देखिलो डायरेक्ट तुम से अप्रोच कले दैट बिकम्स stronger. So attitude, finally it is attitude, it is formed to direct experience becomes stronger. So either you are directly approached
or you are directly exposed with a particular attitudinal survey, or somebody is saying you are directly exposed. Any direct exposure become more durable, or more stable, or more resistant. So in that case, possession cannot be that effective. So now I come to, there are all these ways how attitude and behavior are linked, and attitude is going to influence behavior, and strongly the bondage is created, and it is immune to any change. Even persuasion cannot be effective in that way. So now I come to stereotype. Stereotypes, as I have told earlier, a group type of group label. So you say to a group, this group is this, that group is this. So here you put some people, group or some person with some belief that some trait or some characteristics are shared by these group members. And by a trait, by a characteristics, a group ro. ତାହେଲେ ତୁମର ଗୋଟେ stereotype ତୁମର develop କରଲା. The stereotype may be gender stereotype, like ଝିଅ ମାନେ warm, ଝିଅ ମାନେ dependent, on the other hand ପୁଅ ମାନେ competent, ପୁଅ ମାନେ independent. ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ feminine trait ଅଛି warm, emotionally sensitive, kind, submissive, aesthetics, ये सब होला feminine qualities. ସେମିତି କହିପାରିବା ଯେ competent, aggressive, confident, independent, leadership quality, ये सब ପୁଅ ମାନଙ୍କର masculinity. ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପିଂ କରୁଛୁ ଜେଣ୍ଡର stereotypes, ଏୟା ଥିଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଏୟା ଥିଲେ ପୁରୁଷ ଲୋକ, ଯଦି ଏୟା ନାହିଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, not suitable. ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର stereotype, ଆମେ ଗୋଟେ ଲାବେଲିଂ କରିଦେଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ମେମ୍ବରକୁ, କହୁଛେ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏଇ ଗ୍ରୁପର, ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏଇ ଗ୍ରୁପର, ତାକୁ କୁହନ୍ତି stereotype. So here these stereotypes predict our behavior. କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଝିଅମାନେ ବେଶୀ ଇମୋସନାଲ, ବା ଝିଅମାନେ ବେଶୀ ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍, ବେଶୀ କାଇଣ୍ଡ. ତେଣୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା କହିଲେ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ କଥା ରହିଯିବ, ଆମେ we can predict. ତେଣୁ this type of stereotype helps us in predictability, and also stereotypes are difficult to be changed. ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ହେଇ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ସହଜରେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ନାହିଁ. So another concept is prejudice. Prejudice is like a stereotype, but prejudice is always a negative feeling to a group. It's a type of negative emotion. So Alport was psychologist in 1954. He told an antipathy based on faulty and inflexible generalization is called prejudice. What a faulty generalization. ଥରେ ଦେଖିଛେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ ଜେନେରାଲାଇଜ କରିଦେଲ ଯେ ଏଇଟା ଖରାପ, faulty generalization. So an antipathy basing on faulty and inflexible, not changeable, generalization. This prejudice may be biologically influenced, and also maybe because you can say they are all inferior, they are all dark, they are say all these things, they are the Negroes. It's a prejudice. So we have racial prejudice, ethnic prejudice, we have many types of prejudice, which is very harmful to society. And in this prejudice, we are having in-group and out-group evaluation. We are emotionally evaluating in-group members favorably and out-group members unfavorably. And the prejudice is a cause of war, cause of tension. Communal prejudice, in the society. So a communal prejudice को बहुत क्षति भी होती है हमर सब. तो इस हमारा what a negative set of mind रहुची, it's very difficult to change. And how the prejudice develops? The prejudice develops in different ways. The source of prejudice is very common. We find in many ways. This prejudice is a cause of armed conflict. ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି,
गंडगोल होची हाणकाट होची ये सब होची हमरो प्रेजुडिस जुगो होची in various the various sources of prejudice. How the prejudice develops? The sources are of many types. One is threat to self-esteem. The group is threatened by out-group members. ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାବିବ ଯେ self-esteem is threatened by out-group members, then you develop prejudice. And also due to competition for resource. ଜାଗା ଅଳ୍ପ ଅଛି ସେଠି ଆସିକରି ରହିଗଲେ ସବୁ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ଆସି ଅବସ୍ଥା ରହିଗଲେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଆସି ରହିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେଜୁଡିସ୍ ଆମେ ରଖୁଛୁ ତୁମେ ରହିପାରିବି ଏଠି ହିନ୍ଦୁମାନେ ରହିଗଲେ ଏଠି ଆଜି ମୁସଲମାନ ଲୋକ ମୁସଲମାନ ରହିପାରିବନି ପ୍ରେଜୁଡିସ୍ ତେଣୁ ଜାଗା କମ୍ ତେଣୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେୟା ଜାଗା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେୟା there is realistic conflict. Real conflict arise कर जाए due to lack of space and sufficient resource भी मिले नहीं तेणु due to limited resources गोटे ग्रुप आउट ग्रुप को एनिमिकली देखे तुम्हारा खाद्य पे हो जमी पे हो चाकरी पे हो तेणु तुम्हारा ये जो तुम्हारा समझ we are competing in the fast competition तेणु गोटे ग्रुप आउट ग्रुप को देखिबो एनिमिकली चाहेनि जे आउट ग्रुप आसिक जे करने जाऊनी तेणु ये जो कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेस दैट क्रिएट्स प्रेजुडिस एंड thirdly social categorization so here sometimes you categorize ame we us or them semane ये जो we और they ये जो categorize बेबले that creates prejudice. We come to discrimination. When prejudice is exposed in overt behavior, prejudice mind रे थाए और हमें व्यवहार रे यूज करू ये prejudice is overtly expressed or prejudice is used in overt behavior, it is called discrimination. And here due to discrimination we are having verbal aggression, we are having violent behavior, and this racial ethnic behavior जोटी हुए जोटी जने जन को कोना दृष्टि देखे जन को डिसएडवांटेज दृष्टि देखे तेणु आमर ये जो प्रेजुडिस इज एक्सप्रेस्ड मोर ऑफन इन अ डिस्गाइज्ड फॉर्म आमर ताकू जहा फरे आमे सब ताकू विभिन्न उपाय रे आमे शो आमर तीनटा वे अछि बा तीनटा फॉर्म अछि जोठी आमे डिस्गाइज्ड वे रे हम प्रेजुडिस के एक्सप्रेस करू गोटे let us to help so due to prejudice we don't want to help them ये जो टारगेट ग्रुप आमे कहू बा जोटा के को आउट ग्रुप बा केते मेंबर कह केते ग्रुप मेंबर को आमे ड्यू टू प्रेजुडिस आमे we don't want to help so now there is expressed through behavior overtly expressed for example गोटे मुस्लिम पिलाटे गोटे आसकरी तुम मागिला तुम घर रही बोली भड़ारे तो कम देविनी कि गोटे हिंदू लोक जीव मुस्लिम घर को भड़ा रहा से कम देविनी कि गोटे एससी एसटी पिला गोटे एससी 1000 लोक तुम भड़ा मागिब रेंट पाई कम देविनी तो तुम ये कौन हो ना माइंड रे प्रेजुडिस अच्छी नाउ यू आर ओवरटली बिहेविंग इन दैट वे योर बिहेवियर इज नाउ इन्फ्लुएंस्ड इन दैट वे सो यू आर रिलक्टेंट टू हेल्प आउट होची टोकेनिज्म माने तुम चाकरी क्षेत्र दौच सपोज यू डू नॉट लाइक दी एससी एसटी पीपल चाकरी अल्प दौच यू डोंट लाइक वन ग्रुप चाकरी को अल्प चाकरी दौच whether it is taking all the jobs so tokenism so when you help in a token or you are showing help but in a very minimized way tokenism fewer people given employment only to show that हमारा prejudice नहीं हमें तो employment दौचु that is only not to show not because of your free mind आउट कौन ना रिभर्स डिस्क्रिमिनेशन बेले बेले तुमर प्रेजुडिस नहीं बोली शो करने तुम बहुत साहय कर चाकरी बहुत दौच बहुत तुमको हेल्प कर बहुत बांटुच तुमको किंतु यहाँ हूँ कौन ना रिभर्स डिस्क्रिमिनेशन यहाँ कले कौन हुए
ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଲାଗେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ତମର ନାହିଁ କିଛି ପ୍ରିଜୁଡିସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟିଭ ହୁଏ, এটা ଅଲ୍ଟିମେଟଲି এটা ମୋର ପ୍ରିଜୁଡିସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟା ଉପାୟରେ ଆମର ପ୍ରିଜୁଡିସ୍ ଆମର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଡ ହୁଏ। Now the question is how to reduce prejudice. Prejudice has to be reduced. It is a social danger, social stigma. Prejudice ଯୋଗୁଁ ସୋସାଇଟିରେ ଅଶାନ୍ତି ସବୁ ଲାଗି ରହୁଛି। କେମିତି ତାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ? ଏକ social learning approach. ଆମର prejudice ଆମେ ଶିଖୁ from the family, from the parents. So parents must refrain the children by giving suitable rewards, not to think in that way. ତେଣୁ ପିଲାବେଳୁ parents must see that they should learn how to behave equally. So social learning approach. Then increase intergroup contact. So this can decrease by increasing contact. Contact न रहिले मनटा ଗୋଟେ fixed धारणा ରହିଯାଏ। When you mix with people, you can change yourself. So by increasing contact, increasing intergroup contact, you can change prejudice. Then thirdly, by recategorization. You just don't categorize like Hindus, Muslims, Christians, like don't categorize. We categorize, we are Indians. You recategorize. You categorize in a national way, in a broad way. So ଦେଖୁଥିବ ତୁମେ ଖେଳିଲା ବେଳେ କ୍ରିକେଟ ସବୁ ଧର୍ମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯଦି we are playing for India, for one country. ତେଣୁ କିଛି categorization, the broad categorization ଫଳରେ ଆମର ଏପଟେ କମେ। ତେଣୁ ତାକୁ ହେଉଛି recategorization। ଏବଂ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଗିଲ୍ଟ, ଆମେ ଏମିତି ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଯେଉଁ SC ST ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ପ୍ରିଜୁଡିସଟା କମେଇବା ପାଇଁ କାହିଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଓଭର ଜେନେରେସନ୍ କେତେ ବର୍ଷ ଧରା ବହୁ ଜେନେରେସନ୍ ସେମାନେ ସଫର କରିଆସଣି। ଆମେ ଏମିତି ମୁଣା ଦେଖୁଥିଲୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ୟୁନିଟି which has suffered our generation. We have a guilt feeling. So generate the guilt feeling so that we can change the prejudice. We can behave in a favorable way. We have suffered, so please come. I will not think in that way. We have to give in a very comfortable way. We have to share in an equal way. So learning to negate stereotypes. Sometimes we want to negate the stereotype. We should learn how to negate it. So we should consciously negate. For example, we should try consciously just to stop this. So we should assume sometimes we are feeling that the out group is homogeneous. They are in one mind. So naturally we are thinking against them. But this type of ideas should be negated. See, out group में केते जन थिबे तुम भल पाउथिबे, केते तुम एग्री करथिबे. So you have to change yourself. You learn to negate these stereotypes. That type you are having, you negate it, you change it. And lastly, social influence. So the social influence can also change the prejudice. तमे दी सोसाइटी द्वारा तुम्हारा सोसाइटी लर्न करिवो। फॉर एग्जांपल तुम्हें देखुछ जे केते जने ऋषि हमर वाल्मीकि से थिले जने हमर SC ST कैटेगरी रो केते ऋषि थिले, बहुत ऋषि, बहुत ज्ञानी, से माने ब्राह्मण पंडित नोंदी, किंतु जानिबो जे सेमानकर मते टैलेंट रहिछि। तेणु सोशल इन्फ्लुएंस, तेणु आमर बहुत लोक अछंती जिमानकु आमे देखुछु लोअर लेवल रे रहिछि प्रिजुडिस, बट दे आर एसेट। तेणु सोशल इन्फ्लुएंस आमे ताको धीरे धीरे जोड़ा जानला परे, पढ़ला परे, लोक सुनला परे, एई सोशल इन्फ्लुएंस को आमर प्रिजुडिस बदलिबो। तापर आमर नेक्स्ट मु आसी आ गोटे नुआ टॉपिक की एटा इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। आमर आमे आगु कहूछु जे मैन इज ए सोशल एनिमल। सोशल आमे एनिमल आमे गोटे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक नहीं, आम बायोलॉजिकली और एनिमलिस्टिक। तो सोशल कारण आमर सब साइकोलॉजिकल वेलबीइंग। सो वी आर एक्चुअली वी वांट साइकोलॉजिकली टू बी कोएक्जिस्टेंट, खुशी रहिबा। बेले बेले हम चाहूँ सांग दरकार आम निहाती, कारण एक बायोलॉजिकली रिक्वायर्ड, इज सोशली रिक्वायर्ड। Social required for psychological consistency, for psychological well-being.
So here you can say that biologically, when you want to be with others, so we are being safe. And psychologically, I mean, socially, when we are in a group, we are having enjoying time, we are sharing our pleasure. So psychologically, we are being uh, happy for the healthy interaction. We, the human beings, are always crazy for interaction. ଆମର ଆଗରୁ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ ତାକୁ କଥା କଳାପାଣି। କଳାପାଣି ମାନେ କ'ଣ? ଯେ କେହି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ନାହାନ୍ତି, କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ବନ୍ଦୀ ହେଇ ହେଇ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ମାନେ ପାଗଳାମି ହେଉଥିଲା, ସାଇକୋଲୋଜି ଝଡ଼ ପାଗଳାମି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି କାହା ସାଙ୍ଗେ ନ ମିଶିବ ତାର ପାଗଳାମି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେୟାର, ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର inherent necessity. So we are therefore born social. We want to be always in the midst of us, in the midst of others. So attraction is a step ahead of interaction. ଆମେ ଯେଉଁ ମିଶୁଛୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆମ ଦରକାର ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍। We should be attracted. ନହେଲେ we can't interact. And the attraction is a type of relationship of liking. So you must like so that you can be, so you will be attracted. You will have interaction. So there are so many factors for interaction. The number one is need to affiliate. So biologically relevant, as I told you, for physical survival, and socially relevant for psychological well-being. So we need to affiliate. We need to stay together. So some people they say that mate bhal laguni, I want loneliness. He wants loneliness. He says it, but you can't say that he's hiding it. But you can't say that he is not liking others. He likes others. For the time being, because of something he's telling that to stay alone, because of some mental issues. But basically, he also likes to be with others. So in reality, everybody has a strong need to affiliate. So actually, we have sometimes we have a factor like social comparison. So we want to be with others. The social comparison involves two things. One is cognitive clarity. मगर जो गोटे बात्या है कि भय रोग है आम जो गोटे कैलामिटी है गोटे डिजास्टर इन फेस ऑफ डिजास्टर we all want to cooperate. Why? We want to cooperate for two reasons. One is for cognitive clarity. We want to know what is happening, what happens by interaction. We know it. That is cognitive clarity. And sometimes we also mix with others for emotional clarity. So we discuss. So we have the feeling, sharing of emotion, or how does it feel? What is so emotional sharing. So you have to reduce uncertainty. Basically, to reduce uncertainty, we want to be with others. So we want to interact with others. We want to be with others, and especially in the case of disaster, we always want to be together. So here, the need to affiliate is just a basic thing for which we always want interaction. And secondly, influence of affect on attraction. Sometimes we have positive affect or negative affect. For example, we evaluate somebody positively, somebody we evaluate negatively. So we evaluate positively. If we spend time with him, we are having a good emotion, pleasant emotion. So this influence helps us in seeking the interaction. And the influence could be direct influence, when softly approaching personally in voting time. For example, I have told you, voting ବେଳେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଯୋଉ approach କରିବା ପାଇଁ, they are softly approaching.
So the softly approaching or personally approaching the salesman also is approaching you personally. तुम कहूँ केमती तुम यू आर ए क्वाइट नाइस मैन यू लुक वेरी यू हैंडसम यू आर वेरी गुड यदि कहूँ तुमको ये फील गुड फैक्टर तेणु डायरेक्ट इन्फ्लुएंस काम करे बिकॉज ऑफ फील गुड फैक्टर you feel good, then you are easily influenced. Then indirectly also influenced. For example, classical conditioning you working here, तुम्हें भला मूड रे अच्छो जहाँ कहले तुमको भल लगे यदि भल मूड रे ना हो माने भल कहले भी भल लगेबनी तेणु मूड इफेक्टटा एटा गोटे इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस तेणु तुमर ये जो अट्रैक्शन एटा डायरेक्टली तुमर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस को भी हुए इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस को भी हुए गोटे एक्सटर्नल फैक्टर भी मुझे जोटा कहली तुमको नीड टू अफिलिएट और इन्फ्लुएंस of affect and attraction ये होती internal factor ये the internal factors for which you want to be attracted for which you want to make friendship or for which you want internal or you want interaction with others. Now there is another set of factors called external factors which are responsible which are forcing you for interaction and this external factor number one is proximity. Proximity is mere exposure. जहाँ को सब तुम देखिबो पाखरे तुम भल पाइबो. So you love somebody, you are attracted to somebody just because you are seeing him all the time. सबले देखो मॉर्निंग रे गोटे तुम नेबर जे हसी तुम पाखे कथा करछि हसी कि तुम चाहूछि कि तुमको ये करछि विश करछि तो तुम ऑटोमेटिक मन भल पाइबो. तेणु इटी कम होछि ना तुमरो naturally you are attracted to a person with whom you have proximity or nearness and here the proximity could be mere exposure बार बार देखी देखी भी तुम्हारा ये होगे and secondly also the other factor is observable characteristics but physical attractiveness लोक सुंदर होती चेहरा बहुत सुंदर कि तार सी तुम देखले तो गोटे जोर बढ़िया हैंडसेक करुच्ची कि कथबार्ता भारी मॉडरेट तार तो तुम्हें यही फैक्टर गुड़ाक देखिक क्वालिटी जो आइदर फिजिकली अट्रैक्टिव और इज मॉडेस्टी द बिहेवियर एस्पेक्ट all these things that also gets you attracted. So attraction is caused by the external factor and now here other factors are there, internal factor, external factor. Now coming to interpersonal factor. There are three factors: internal factor, external factor, and interpersonal factor. So interpersonal factor also is a cause for attraction. How? Similarity. Similarity is one interpersonal factor which causes attraction. In a foreign country, suppose you are going to America or going to some one new country, when you see some Indians there, immediately you go to that Indian person. When you hear some Indian language, you go to the man, you ask, are you here? How many years are here? You are which part of India? Like that. So you are attracted just because of similarity. You are similar in another country, so you are going to like the person, interact with the person. And another is here also the proportional similarity. If it is more similar, then more attracted. And here, sometimes you are going to have this balanced view because due to similarity, actually you are able to communicate your beliefs, attitudes are validated. Somebody is having the same similar view, so you are getting more validated. You feel that you are actually correct, so you like the man. Similarly, anything not similar, suppose तुम्हारे देखो लोग similar नुहे, so you feel yourself potential danger, so you avoid the person. So similarity counts when you are going to interact with persons. And then another point is
reciprocity. खाली सिमिलारिटी हेनी इट मस्ट बी म्यूचुअल थिंकिंग दियांगर थॉट प्रोसेस एका भाई आइथिबो तुम जब भाबुछ से भाबुछि तुमर फॉर एग्जांपल देयर इज समबडी इज कॉल्ड बॉस पेट बट टीचर्स पेट टीचर भाबुछ जेमति से व्यवहार करछि तेणु तुमर जो लाइकनेस टा बाय इंटरेक्शन इज मोर pronounced or more increased because of reciprocity and mutual thinking, mutual liking. You like me, I like you. That is a cause for interaction. I mean, increasing interpersonal interaction. So here, like this, we are having internal factors, external factors, and interpersonal factors to increase our attraction or to develop more interpersonal interaction. Thank you.